Okay. So here we have the transparent thing, the building. Okay, right. And what we'll do is we need to extend it for 6 seconds because this entire thing will go for 6 seconds, right? So let me extend it to 6 seconds initially. Okay, so I'll come here. I will just insert keyframe, and I will just obviously name this as building. Fine, no problem. I can actually lock it. I always prefer locking it because so that there is no issue. I can add a new layer, and let's do one thing. Let's press Control L, and I need the cloud. So Control L kiya, the cloud, and I'll place the cloud here. Okay, we don't have really good cloud, but fine for us. So the cloud actually again वो इतना ही आएगा. इसको name भी कर देते हैं. It's actually cloud, just one. ठीक है, ये cloud है हमारा. Right, whatever. ठीक है, इसको सही से कर सकते हैं. ठीक हो गया. Now we need to actually add the plane. So I'll actually add a new layer and I'll name it as plane. And obviously I'm going to press Control L and I'm going to insert the plane in the same layer. ठीक हो गया. But remember one thing, जो plane वाली layer है ना, it has to be down. So first we have the building, then we have the plane, okay, and then we have the cloud. So that you might have noticed something, so that it goes behind it. You get the point. It's just like the onion layers. You should know what thing is where. And if you want to make this transparent, I'll also tell you that आप तो transparent किस तरह कर सकते हो. तो पहली बात तो ये कि ये जो आपका plane है, ये भी आ गया इधर, ठीक है, but has to follow a particular path. तो बेहतर ये होगा कि मैं plane का जो size है, अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, right? And the plane actually has to. So this is why I like locking the layer. मैं इसको भी lock कर देता हूँ. हमने सिर्फ plane को temper करना है. So here we go. So now the important thing is that I want this plane to follow a particular path. Maybe if you remember how this motion guide layer work, okay? If you want me to revise some of the animate tomorrow, अगर time बचे तो मैं वो भी कर दूंगा आपको to some topics for animate. आपको इसको convert करना पड़ेगा into motion plane. So what I need to do is I need to go at the end. I need to say over here is insert keyframe, and we'll say create classic and create classic. ठीक है? Now क्योंकि अब इसको मैं move कर सकूंगा. But the important thing is कि हमने इस पे एक लगाना path. So if you read the question paper, are you with me, beta, all of you? Yes, sir. Yeah. You can see over here is the path actually goes like this. So first, let's do this step. So in order to do this step, what I need to do is, you do know that we have an option that says add classic motion guide. So I'll click on this. A new motion guide is added. And I'll make sure I click at the beginning. Okay, some points are really important. Once you add the motion guide layer, be sure you don't click anywhere else, not down. Same layer के शुरू में click कर दो, and from here use a pencil. Make sure the pencil is actually smooth, and relatively use dark color so that you know what you're drawing. मैं चाहूंगा कि path आए ऐसे, and it has to be smooth. And here you go, right? Okay. Well, you know, as soon as I do this, वो उसको आके खुद stick कर जाते हैं. आपने note किया होगा. Okay, obviously you have done this in the past. अब मैं क्या करूंगा, जो plain वाला frame है, उसके end पे आऊंगा, and I'm going to actually take it to the other end. This is where I am. Now, if I press enter, actually, it goes this way. But obviously, it's not going in a very normal way. It looks like a very pathetic animation. It has to follow. उसके लिए what we do is we can use is over here F6 again and again. F6 क्या होता है? F6 होता है आपका insert key frame. क्या कह रहा हूं मैं, बताता हूं मैं आपको. So if I come here, अब देखोगे, अच्छा वैसे एक और काम ना करने पहले, if I'm not confusing you, हम जरा क्लाउड को भी ट्रांसपेरेंट कर लें तो अच्छा लगे. क्लाउड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको उसको भी करना पड़ेगा. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंबल. आप वैसे डायरेक्टली भी सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर ये ऑप्शन आ रही है. कन्वर्ट टू सिंबल कहाँ गया? सिंबल. है जी बेटा.
ये क्लाउड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसके एंड में जाना पड़ेगा पहले, जी मैं लास्ट में क्लिक करना। अभी हो जाता है। देखो ये जस्ट क्लिक है, आप करो इंसर्ट की फ्रेम, क्रिएट क्लासिक एंड क्रिएट क्लासिक। तो हम क्लाउड को कर देते हैं, मैंने लॉक किया हो, इसकी प्रॉपर्टीज में आओ और इसको हम कर देते हैं कितना ट्रांसपेरेंट, अल्फा ज्यादा ही हो गया, लेट्स से दिस मच इज फाइन। ओके, कितना मैंने किया 55, और मैं शुरू में भी इसको हम कर देते हैं 55, राइट। इधर गया, ठीक है ठीक है। अब इसको फायदा ये हो रहा है कि नाउ व्हाइल आई विल बी डूइंग दिस, you will see where okay, it says bit transfer going from the back. Now, I'll just come here and I will use F6. Okay, in F6, I will insert a keyframe. Now, what I can do is actually I can move this way. I can come here, fine, no issue, no issue, and no issue. Yes, there is an issue. F6, and I'll just tilt it. This you have to do manually. I mean, इसका कोई ऐसा नहीं है कि वो पाथ के मुताबिक करेगा, नॉट टिल द करंट वर्जन से हम काम कर रहे हैं। ओके, वेल आई टुक वेरी वेरी ऑड प्लेन बाय द वे, इतना बड़ा प्लेन यूं चाहता, अजीब सा लगता है, बट इट्स फाइन। ओके, so I'm pressing F6 and I have to rotate this manually myself to in order for the animation to look bit more realistic. ओके, आगे आते हैं। ये मैंने क्या किया, सॉरी कंट्रोल जी कर लो। मैंने इधर आया था and F6, sorry I'm pressing the wrong key, but insert keyframe, ठीक हो गया, insert keyframe, वैसे ठीक ही है, ठीक है ठीक है, this is fine now. So you see if I click on this now, I'll do it again. So it goes this way. Yeah, I know. Fine, right? And then what happens is for the next 1 second more, which means till here, so you can do is press F6, 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 and F6. Nothing happens. उसके बाद वो कहता है कि ये दोबारा वापस आए। You get my point? So what we need to do now is हमने इसको दोबारा टर्न करना है। Well, इसके लिए what we can do is let me try this. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? Sir, बेटा बोलो। will the plane be visible from outside the screen when we play the No. animation? No, it won't be. See, right? Yes, sir. It is not. Oops, yeah. अच्छा, अब वो कह रहा है कि after this 1 second वो मैंने कर दिया। Let me extend this a bit more. किधर है? Can I? No, I can't. चलो खैर, मुझे चाहिए था इसको हम थोड़ा ना यहाँ तक extend कर देते हैं। खैर anyway, now let me see. Do I need to make another layer or can I use the same one? नहीं, मुझे different करना पड़ेगा। इसलिए I get my point. क्योंकि now when it turns back, it has to follow a different path. मेरी बात समझ रहे हो? तो उसके लिए एक टोटली डिफरेंट चीज हमें करनी पड़ेगी। हमें ये करना पड़ेगा कि मैं इधर ही आऊंगा एंड आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू लेयर एंड अगेन इन दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू से इंसर्ट की फ्रेम एंड कंट्रोल एल, आई एम गोइंग टू प्लेस द प्लेन हियर। ओके, एंड ऑब्वियसली मैं इसको यूं भी कर सकता हूं, आई एम गोइंग टू प्लेस इट हियर। और नेक्स्ट 6 सेकंड के लिए जाएगा तो उसको आप 7 को भी एक्सटेंड कर देते हैं। सो 7 + 6 is 13. So we have to go till 13. Here we go. ये हम आ गए 13 पे। So I'm going to extend all of them till 13. Are you with me, all of you? I hope I'm not talking to my... Yes, बेटा? उन्होंने क्वेश्चन में तो 7 सेकंड तक आता, तो आपने 13 क्यों किया? क्या बेटा? उन्होंने क्वेश्चन के अंदर तो 7 सेकंड्स नहीं कहा था।
नहीं बेटा, क्वेश्चन उसने कहा था कि पहला जाए 6 पे, फिर उसने कहा था 6 के जाने के बाद वो कह रहा था कि 1 सेकंड के लिए कुछ भी ना हो, और फिर प्लेन दोबारा अपीयर हो और 6 सेकंड्स के लिए यहां से यहाँ दोबारा वापस। सो 6 + 1 7, 7 + 6 13। Am I right? Yes. Get my point? Okay. So plane 2 Yeah. इधर आया, plane 2 इधर आया। I don't need this. I'm going to now lock these. इनको मुझे नहीं चाहिए। So मुझे I just want to work with plane 2. So plane 2 में ही हम ऐड करेंगे अब। ये मेरा plane 2 है। हेड मोशन गाइड क्यों नहीं ऐड हो रही इसमें? 1 सेकेंड। ओहो सॉरी, उसको ना उसकी गाइड समझ रहा है। नहीं नहीं नहीं, अच्छे काम करते हैं। मैं इसको फिलहाल ऊपर ले जाता हूँ, बाद में चले आएंगे। ये है, इसको हम कर देते हैं इंसर्ट मोशन गाइड। आई टेल यू व्हाट टू डू, बाद में बताता हूँ। यू गेट माय पॉइंट? व्हेन इट वाज डाउन देयर ना, वो उसको उसके मोशन का उसको सेपरेट समझ रहा था, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ब्रिंग इट हियर। अच्छा मैंने प्लेन इंसर्ट किया है ना, प्लेन यहाँ इंसर्ट किया हमने, ठीक है। तो हमारी जो मोशन गाइड है वो यहाँ स्टार्ट होगी। सो आई विल से ओवर हियर इज इंसर्ट की फ्रेम, और आई विल यूज ओवर हियर इज अ पेंसिल, और वो स्टार्ट होगा यहाँ से और यहाँ तक आएगा, ठीक है। अच्छा एक काम हम करना भूल गए, सॉरी। वी वर सपोज टू क्रिएट क्लासिक एंड क्रिएट क्लासिक, राइट। राइट, अब एंड पे हम उसको ले जाते हैं इधर, ठीक है। जरा चेक कर लूँ कि इस चक्कर में कि खराब तो नहीं हुआ। आई डोंट थिंक सो, वैसे बाय द वे नहीं हुआ है। ये शुरू में यहाँ आना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी। एक सेकेंड, मैं बेटा में काम करता हूँ, मैं इसको ना डिलीट करता हूँ। ओके, सो जस्ट थिंक कि मैंने प्लेन ऐड किया है, और यहाँ के मैंने किया इंसर्ट क्लासिक टू इंसर्ट क्लासिक टू, ठीक है। मैं कुछ नहीं किया, मैं दोबारा कर देता हूँ। सो आई ऐड इज अ क्लासिक मोशन गाइड लेयर, और मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से एक सिंपल एक पाथ डाल दूंगा दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज टिल ओवर देयर, ठीक है। सो अगेन सॉरी, ये जो है ना मुझे करना चाहिए, इधर आता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम, और अब डालता हूँ। दोबारा तो नहीं हुआ। सो लेट्स सी नाउ। जी जा तो ऐसे ही, जा रहा ऐसे ही, चेक कर लो एक बार एंटर करके। और ये 6 सेकेंड्स के लिए जाए उन्होंने कहा है। और फिर उन्होंने कहा है कि फॉर द नेक्स्ट 1 सेकेंड अगेन नथिंग शुड हैपन। दिस मीन्स मैं इसको दोबारा क्या करूंगा, आई विल कम हियर एंड आई विल प्रेस अगेन F6, 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 F6 and F6. So control enter. Can I check first? 1 second. So for 1 second कुछ नहीं होगा। अच्छा ये मुझे चाहिए था, छुपा लेता, खैर यू गेट द पॉइंट। और फिर 6 सेकेंड्स के लिए गोज, 1 सेकेंड के बाद Sir, how do we hide the plane end from the other end? no, we have to hide. Actually, I didn't have the exact. Why does it go? Um, you no, you can hide it. That's what I'm saying is, what you do is initially just कहाँ था? Where was it? Over here, right? All I have to do is just extend it. मैंने उसको lock किया हुआ. But you get the point, right? When you Yes. just extend it more. But you get the point. The most important thing is layers. You need to understand layers. बड़ा आसान concept है. Which layer is coming at the bottom, which layer is coming at the top. ठीक है. It's not something very complicated. Understanding layers. It's exactly the same thing. मैंने file थोड़ी change की है. But I hope, Anu, did you get my point or not? Yes or no? Where did Yes, you get, sir. I where did you get understand. confused? Which part? I can stop the recording. And now you can tell